Hello everyone, welcome back to our channel Nursing Key. So today's topic is ethical principles that we have talked about in fundamental nursing. ये नर्सिंग का बहुत ही कॉमन टॉपिक है और फंडामेंटल में भी आपने पढ़ा होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एथिकल प्रिंसिपल्स. देयर आर मेनली 7 एथिकल प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी. इट इज रिस्पेक्टिंग एन इंडिविजुअल एंड पेशेंट बिलीफ. A patient has the right to make their own healthcare decisions and the right to all choices in their care. And इसको याद करने के लिए जो मेमोरी ट्रिक है, autonomy, think all by myself. I make my own decision. Like for example, if patient refusing for his treatment, सभी पेशेंट के पास राइट है कि वो अपने ट्रीटमेंट या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं. The next one is beneficence. This is always doing good to the patient and to maintain a balance between benefits and harms. Means doing right for the patient and acting with compassion. The nurse should always choose good for the patient, and the nurse decides what is best for the client and encourages the client to act against his or her own choices. And you can remember this with the memory trick. Beneficence means benefit and benefits means good. So all the choices for a patient are made with the intent to do good. Next is fidelity. The duty to do what one has promised, in which the nurse remain loyal and faithful in all action and care. अगर आप किसी पेशेंट के साथ कोई प्रोमिसेस या कमिटमेंट कर रहे हो तो आपको पेशेंट के साथ उन प्रोमिसेस के लिए फेथफुल रहना है. डू नॉट डिसीव और एक्सप्लॉइट. फिडेलिटी इज एट द कोर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हेल्पिंग प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स. प्रॉमिस कीपिंग, ट्रस्टवर्दीनेस एंड लॉयल्टी. सो ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. सो इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या मेमोरी ट्रिक है? फिडेलिटी, थिंक, फेथफुल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एल्डरली पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए हो और आप उन्हें कहते हो कि मैं 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी. तो आपको अपनी कमिटमेंट पे लॉयल रहना है. ये नहीं है कि आप नहीं जाते हो या लेट जाते हो. तो दिस इज़ फिडेलिटी. नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी. सो इन अकाउंटेबिलिटी, नर्स विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्शंस and they are accountable for all the errors or mistakes. You can remember this by the memory trick accountability. Think I am accountable for my actions. Example, अगर कोई नर्स पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रही है और वहाँ पे मेडिकेशन एरर होता है तो नर्स ही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और वो ही अकाउंटेबल होगी. वो हाइड नहीं कर सकती. सो दिस मीन्स नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर एक्शंस. Next is justice. So justice means the equitable distribution of potential benefits and task determining the order in which client should be cared for. And principle of justice involves equal care will be delivered to all and giving to all persons their rights or deserts. So you can remember this with the memory trick. Just means fair. I just want fair care for all. For example, हमारे पास डिफरेंट तरह के पेशेंट होते हैं. डिफरेंट एथनिसिटी के पेशेंट होते हैं, डिफरेंट डायग्नोस के पेशेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हमारे पास पेशेंट होते हैं. हम डायग्नोसिस के बेस पे, जेंडर के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे और उसकी स्टैंडर्ड के बेस पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं करेंगे. हम उससे फेयरली ट्रीट करेंगे. दैट मीन्स जस्टिस. Next one is non-maleficence. The obligation to do or cause no harm to another. So ये basically एक notion पे based है कि हमें patient को harm नहीं करना है. That is more important than to do good. So non-maleficence means do not harm, intentional or unintentional. So it means never perform a treatment that will result in harm to the patient. So you can remember this with the memory trick. Non means none, mal means bad. It means do not bad or do no harm. For example, अगर नर्स पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही है तो मेडिकेशन एरर के बारे में उसे पता होना चाहिए. उसे मेडिकेशन को क्रॉस चेक करना है ताकि वो पेशेंट को हार्म ना करे. पेशेंट को क्रॉस चेक करना है ताकि हम गलत पेशेंट को मेडिकेशन ना दे दे. उसे बैंड चेक करना है और जो भी हमारे मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए हम चीज़ें करते हैं वो सारी चीज़ें करनी है ताकि मेडिकेशन एरर ना हो और पेशेंट को हार्म ना हो.
So again, non-maleficence means do not harm, that is intentional or unintentional. Next one is veracity. So veracity means truth. Nurses must be honest with patient as well as in the documentation and communication with the colleagues. So veracity is entirely honest with the patient at all times. You can remember this by the memory trick. Veracity, think, very honest. So इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही सिंपल है कि पेशेंट से झूठ नहीं बोलना है. डू नॉट लाई विद द पेशेंट. Like if a patient was starting chemotherapy and asked about the side effect, a nurse practicing veracity means telling truth would be honest about the side effects they could expect with chemotherapy. So this is about the veracity. So let's summarize the topic. First is autonomy, the right to make his her own decisions. Autonomy, think all by myself. Beneficence means doing right or doing good. So memory trick is benefit means good. Fidelity, remaining loyal and faithful. Fidelity, think, faithful. Accountability, responsible for all actions. Memory trick, accountability, think I am accountable for my actions. Justice, equal care. Memory trick was I just want fair for all. Non-maleficence, do not harm. Memory trick was non means none, mal means bad. And veracity means remaining honest at all times. So memory trick is veracity, think, very honest to the patients. So this is all about the ethical principle. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.